welcome everyone. I hope you guys are doing good. This is me, Abu Bakr Dilawar. I welcome you all to our latest episode of Founders Kahani. Today we have a very amazing guest. Personally, I'm very excited for this episode because today we are going to discuss my favorite topic, which is the branding and the marketing. And recently, Lahore has got a new co-working space whose branding, whose work is really amazing. And I think the people who live in Lahore or know the startup ecosystem of Lahore are well aware of this space opened by Dev Singh. And today we are having the guy behind the branding and the marketing of that amazing co-working space. How are you, Sheryar? Alhamdulillah, ji. Thank you so much for having me with you on this podcast. Doing great, ji. Amazing. So this is Founders Kahani. Like, if we ask, what's your kahani is? Well, my kahani is probably just like any other middle class boy who started from a grassroots level. From a very young age, I was very confused about what I wanted to do with my life. Like we all have this question when we are growing up, कि हमने जिंदगी में क्या करना है, क्या बनना है. So I experimented a lot in my earlier years. I went from IT to branding to marketing, doing my BBA from UCB. Then I left that and I went to abroad. When I went to Malaysia, I was studying hospitality management over there. Then halfway, I moved towards graphic designing and visual communication and make branding uh, as my key skill. And marketing and branding and sales, they all go hand in hand. So when I started working, I was in my probably second or third semester. I started small with an agency. I started as a junior graphic designer. Then I worked my way up. Then I worked with a lot of big brands like Shapes, like Nishat Linen, like Maria B. Then I recently joined Focused as their marketing and branding lead. So whatever you see going on over here, that's all coming through me. That's really nice. That's really nice. By the way, how do you define like core elements of the startup brand identity? And what role like these brandings plays in startups growth? Well, I think branding is one of the most crucial elements for any startup, especially in this day and age of communication where everything is visual. People tend to register whatever they see, and I think branding should deliver a message in a split second. Like whatever your product or service might be, your branding should be so much on the point that अगर एक second के लिए भी कोई चीज़ आपकी नज़र से गुजरी है ना, so it should register to your target audience or your clientele or even a layman कि उसको समझ आए कि जी ये चीज़ मुझे click की है. So I think for any new startup, whatever the service or product it might be offering, uski branding should correlate to that service or product, and it should deliver that message visually. So branding is like everything for a startup. A branding can either make or break any brand. Yeah, exactly, exactly. So, branding की हम बात कर रहे हैं. So basically, one of the major aspect of in the terms of branding is the logo. So, how do Yeah. you like? How does or how strong a role plays a logo in a startup's brand value or startup's growth or startup face value? I think a logo is the key in branding, right? क्योंकि आपका logo जो है, it's going to be associated with your merchandise. It's going to be associated with your whole environment of, let's suppose if you're talking about a co-working space, जिस तरह focused है, the logo is going to be the first thing that anybody sees. नाम Okay. और बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं. Like I'll give you an example. Apple Corporation, Dell, Pepsi, Coke, McDonald's, when they started, उनकी पूरी tagline और नाम सारा कुछ साथ आता था initially, right? But as they progressed, as they grew, अब उनका सिर्फ लोगों के जो watermarks हैं सिर्फ वो अब लोगों को नजर आते हैं. I'll give you an example. आप HP को देखते हैं, it has come down to only 4 lines. ठीक है, एच की 2 लाइंस और पी की 2 लाइंस है. उसने एक विजुअल आइडेंटिटी अपने लोगो के इर्द गिर्द इस तरह बना ली है. नाउ व्हेनेवर यू लुक एट दैट, आपको पता चल जाता है ये जी एचपी का लोगो है. सेम इज द केस विद मैकडोनल्ड्स. मैकडोनल्ड्स के पहले नीचे पूरा उसका नाम लिखा होता था, फिर उसके नीचे उसकी एक टैगलाइन होती थी. और नाउ व्हेन यू लुक एट, अब से वो उसका जो गोल्डन आर्च है वो एम वाला, दैट्स द ओनली थिंग यू सी. And Pepsi is a very big example of all of this. Pepsi is actually one of जब मैं branding के बारे में बात कर रहा हूँ तो Pepsi is one of my inspirations, क्योंकि the way they have created their
whole identity around their logo, and throughout the years वो जिस तरह से play करते रहे, I think we all can learn a lot from their branding strategy and from their logo. Like starting from in अर्ली 70s 80s के अंदर जब उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था, लेट्स आई थिंक 60s में किया था, तो तब द लोगो वाज टोटली डिफरेंट. एक स्क्वायर लोगो था विद द ब्लू एंड द रेड सर्कल्स, और उसके नीचे पूरा पेप्सी लिखा होता था. देन दे केम डाउन, मतलब अब जब उनकी अब रिसेंट कैंपेन आई है, दे हैव रिवर्टेड बैक टू दैट ओरिजिनल वाला गोला. So I think logo is like the welcoming door to any company or startup. Yeah, yeah. I think Pepsi is also my inspiration for if I look at the branding side of the company. Mm-hmm. So there is one more thing, like most of the startups are the startups who are built it from the scratch, and you have to start the brand identity from the beginning. Okay, so Yeah. you also like started focused branding from the grassroots, from the scratch. So, what are the key factors we should think if we are starting our brand from scratch? आई थिंक द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जब आप एक ब्रांड स्टार्ट करते हैं, आप एक उसका एक विजन रखते हैं. ठीक है. वेन एवर आई गिव दीज सॉर्ट ऑफ सेमिनार्स, और वेन एवर आई गिव दीज टॉक्स इन क्लोज सर्कल्स, मैं उनको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट अ टारगेट. ठीक है. आप एक अपना गोल बनाते हैं, देन यू फाइंड द वे कि मैंने इस टारगेट तक पहुंचना किस तरह है. नाउ देयर आर डिफरेंट रूट्स कि आप उसकी टू गेट देयर. अब इवन विद फोकस्ड व्हेन वी स्टार्टेड ब्रांडिंग इट, तो हमने वी ऑब्वियसली लाइक नेचुरली हर टीम में जब आप कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, तो यू हैव डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ लोगोस की, जी दिस इज सम सैम्पल 1, दिस इज सैम्पल 2, दिस इज सैम्पल 3. व्हेन यू इवन व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द नेम, तो डिफरेंट डिफरेंट नाम आते हैं आपके दिमाग में. और व्हेन वी केम टू फोकस्ड, व्हेन वी डिसाइडेड कि फोकस्ड हमने नाम रखना है, सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया, राइट. और देयर इज एन होल आइडिया बिहाइंड फोकस्ड कि हमने फोकस्ड का नाम रखना क्यों था. ठीक है. आई थिंक मैं आई गिव यू थोड़ा सा मैं इसमें टाइम आपका ज़्यादा लूंगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक कोवर्किंग स्पेस की जब आप बात कर रहे होते हैं, तो you ask yourself, why do you want to start this initiative, right? We have like key players in the market already who are been here since like the past 10-12 years, मतलब over a decade. So when we are entering the market, हम एक नई market को enter कर रहे हैं, और we are coming up with a new brand, a new name, a new player. तो why is the very big question. Okay, what's gonna differentiate you between the existing players in the market, right? So focused का जो नाम भी है ना, that gives you an idea कि जी over here you can focus on your work, you can basically concentration वाली game है सारी, कि we cut out all of the distractions and we give you an environment where you can focus. Now when I talk about the logo of focus, इसको अगर आप देखें, people look at it from very different angles. Like I really like that part, जब मेरे से कोई पूछ रहे थे कि focus का logo इस तरह का क्यों है, so I asked them कि what do you think this is. ठीक है. नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल. अब ये जो द पॉइंट दैट यू कैन सी ओवर द डॉट एंड the square that you can see on the sides of it, the square is actually focusing on that dot, and that dot represents you, and this whole thing represents your working environment. See, like it's focusing on you. So anybody who's sitting at focused, we are, that's our focus point, कि हमने उनको वो environment वो provide करना है जो आपको XYZ किसी भी और जगह पे नहीं मिलेगा. So I think building a brand up from scratch, these things play a major role in whenever in your ideologies, in your vision or mission के अंदर, these things play a very crucial role. So consistency इसके अंदर सबसे ज़्यादा important है. Why? Because everything that you're going to be designing after this, हर मैसेज, हर सेमिनार, हर आपकी टैगलाइन, हर आपका लेट्स सपोज इवन कि आपकी ऑफिस स्टेशनरी अगर आप बना रहे हैं, so that revolves around it. Yeah. So you have to be consistent in all of that. Yeah. So yeah, talking about the consistency, like I also believe that कि एक brand जो होता है ना, वो अपने आप में एक identity होता है, और उस identity के Yeah. अपने कुछ personality traits होते हैं. For example, if we talk बिल्कुल. about L'Oreal, it's a fashion brand. It's always talk Yeah. about fashion, like elegant type of a fashion. And in the similar case, if we talk about like Disney,
Disney is always like the funky part, the funky thing. Yep. So they always do that funky things. Even their marketing campaigns are very funky. And I'm personally a very Yep. huge fan of Red Bull's marketing. Like Red Bull is a kind Mm-hmm. of a brand who's for the youngster. So they're Yep. all their company, all their marketing are resonates with the youngsters. All that you can say like these brands are designed for the youngster people, designed Yep. for a specific kind of young people, right? So Hmm. हम अपने आप को consistent किस तरह से रख सकते हैं if we talk about the brand identity in especially in terms of startups, क्योंकि startups में every day there is a new challenge and you are changing Yep. every day, you are evolving every day in terms of startups. So how to remain consistent in terms of branding if we talk about startups? This is one of my favorite questions. And since you've spoken about Red Bull, so that is already a benchmark for like me and when I'm talking about focus, right? अब रेड बुल का अगर आप सोशल्स खोल के देखें, उनका इंस्टाग्राम खोल के देखें, आपको रेड बुल का कैन कहीं नजर नहीं आएगा. ठीक Yeah, है. दैट्स अ exactly. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. यू नो व्हाई मार्केटिंग के तो दो चीजें होती हैं. देयर इज ऑलवेज अ पुल स्ट्रैटेजी एंड देयर इज अ पुश स्ट्रैटेजी, राइट? अब पुल स्ट्रैटेजी के अंदर ये होता है कि आप अपना प्रोडक्ट और आप अपना सर्विस जो है ऑडियंस के सामने ले आते हैं कि जी दिस इज व्हाट वी डू, हमारी सर्विसेज एक्वायर कर लें. ठीक है. एंड पुल स्ट्रैटेजी के अंदर ये होता है, जिस तरह रेड बुल प्लेज वेरी एलिगेंटली विद दिस. वो ये जो आपके हाइपर स्पोर्ट्स होते हैं, जिस तरह नास्कार रेसिंग होती है या स्कीइंग होती है, स्काई डाइविंग होती है, ये जो आपके एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होते हैं, ये अपने आप को उनके साथ एसोसिएट करता है, राइट? एंड आप इनमें से किसी भी ऐसी मतलब हाइपर स्पोर्ट को किसी को देखें तो आपको उसके अंदर रेड बुल का लोगो जरूर नजर आएगा. दे विल ऑलवेज बी अ स्पॉन्सर्ड पार्टनर फॉर दैट. लेकिन कंकरेंटली ऑन द अदर साइड आपको उनका जो कैन है ना, उनके पूरे सोशल मीडिया पे कहीं नजर नहीं आएगा. सी, Yeah, वो अपने एनवायरनमेंट से ऑडियंस को इतना एंगेज कर लेते हैं कि पीपल स्टार्ट टू थिंक भाई रेड बुल इज लाइक नॉट प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्ट बट इट्स प्रमोटिंग इट्स मतलब जो टारगेट ऑडियंस है उसकी, जो कल्चर है उसका, जो लाइफस्टाइल उसका, मतलब इस सेटिंग अ टारगेट कि इफ यू आर इनटू स्पोर्ट्स रेड बुल इज योर ब्रांड. ठीक है. अब सेम इज एग्जांपल विद कोका कोला, राइट? अब कोका कोला का पूरा आप ऐड देखेंगे, उसमें आपको फैमिली वाला एक टेबल दिखाएंगे, उसमें सारे खाना खा रहे हैं, फिर एक खातून आएंगी, वो बोतल खोलेंगी, ग्लास में डालेंगी, और एंड में क्या होता है जी? शेयरिंग हैप्पीनेस. ठीक है. कि कोका कोला ने अपने आप को हैप्पीनेस के साथ एसोसिएट कर लिया. ठीक है. तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी दैट एवरी ब्रांड नीड्स. आप अपनी नीश को जब आइडेंटिफाई करते हैं ना, तब आपकी कंसिस्टेंसी डेवलप होना शुरू होती है. लाइक यू हैव टू सेट योर टारगेट ऑडियंस कि दिस इज द चंक ऑफ ऑडियंस दैट आई वांट टू एंगेज विद माय ब्रांड, दीज आर द पीपल दैट आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद. मेरे ब्रांड का नाम इन लोगों के साथ लगना चाहिए. ठीक है. जब आपने अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लिया ना कि जी दिस इज द पीपल जिनके लिए मेरे प्रोडक्ट है या सर्विस है, योर कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स बीइंग कंसिस्टेंट. yeah, exactly, exactly. And even though when the Red Bull sponsor an event, they don't want their logo on any of the flags. They don't want their logo बिल्कुल, on any of बिल्कुल. the social. But still, there is Red Bull Yeah, sponsoring the yeah. event. Even when we did the open house last week at Focus, so Red Bull was a refreshment partner, ठीक है, Yeah, and they were here. उनकी जो मिनी कूपर आती है, इसके पीछे पूरा कैन लगे हुआ है, that was here. They were doing a sampling session, plus they had their refrigerator on the stage वाले area, and that was all like a partnership. That was it. There was yeah, nothing else in there. मैंने उनको कहा था कि जी हम आपको अपने सोशल पे प्रमोट करना चाहते हैं. उन्होंने कहा दे एक्चुअली डोंट नीड दैट, राइट? उन्होंने अपने आप को इतना एस्टैब्लिश अब कर लिया है कि नाउ अब उनकी ये वाली जो एक्टिविटीज है ना, लाइक दे आर बीइंग एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ दीज बिग नेम्स एंड दे डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, राइट? सो दैट्स ऑटोमेटिकली अ बेंचमार्क फॉर यू कि yeah. यू आर गिविंग away everything but you don't want anything in return, and that itself sets a benchmark. This is where a startup should reach. Yeah, exactly. So, Sharia, today, like the world is very competitive, especially in terms of like marketing or advertisement. There are a lot of competition and a lot of things happening in kind of influencer marketing, storytelling marketing, all that kind of a marketing. So, Mhm. how a startup founder can identify, can be a differentiate from the other competitors in the market in terms of advertisement and branding?
I think the story behind the whole product is what sets you apart. Like, I'll give you an example. I've worked with a lot of fashion brands, right? I've worked with Nishat, I've worked with Maria B, and I've worked on the side freelance with a lot of small fashion brands. Okay, yeah, I would say design houses who were starting like 5 7 years back, or now they're at a very big stage. So I think the story behind the whole brand, the whole startup, is what sets you apart. And you're right, the world is changing rapidly. Everything, every day is a new एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन, एक न्यू चैलेंज है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ ये होती है कि अभी आप एक चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं एंड द अदर पर्सन स्टार्ट्स ऑलरेडी डूइंग इट। Yeah. ठीक है, सो इट्स लाइक अ रेस। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन टू रजिस्टर एन इनिशिएटिव इज गोना बी हु इज गोना बी लीडिंग दैट इनिशिएटिव। सो आई थिंक इस चीज के अंदर यू यू शुड रिवॉल्व एवरीथिंग अराउंड योर स्टोरी, कि व्हाई आई फाउंड के जी ये नीड हमारी मार्केट में नेसेसरी थी, दिस इज द सॉल्यूशन दैट आई हैव गिवन इट, एंड दिस इज वेयर आई एम गोना टेक इट इन द नेक्स्ट 5 10 years. So the story should be so attractive, it should be so meaningful and fruitful कि the audience could not cannot resist कि जी वो अपने आप को आपके ब्रांड के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करे. So I think that's my take on that. Yeah, by the way, do you believe like target customer, building customer persona plays an important role in terms of branding? अच्छा, इसके अंदर दिस इज अ वेरी ट्रिक क्वेश्चन बाय द वे. व्हेन वी वर स्टार्टिंग फोकस, तो एक हमें ना बड़ा क्वेश्चन आता है कि देयर इज अ स्मॉल चंक ऑफ ऑडियंस जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, राइट? कि लेट्स सपोज देयर इज अ पाई एंड यू हैव टू टेक दिस पीस ऑफ द पाई एंड दैट्स इट. But what I believe is कि I believe in making relations with the customer, right? कि let's suppose अगर कोई बंदा मेरे प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं भी है ना, so I would invite him over for a cup of coffee. I will, have a chit chat with him. I will show him around, and I will tell him कि how can we be helpful for each other? How can we collaborate? So the sky is the limit. I think you can make good relations with people and your brand automatically starts growing. So it's not limited to a small chunk of audience. You can always outgrow that audience. You can always grow your clientele. You can always grow your customer platform. Okay, okay. So, Sheryar, most of my listeners are like startup founders, especially in the tech field, and mostly of them have like the software houses, like they do the software Mm-hmm. development kind of a thing. So, these software tech startups don't take social media that much seriously. So, do you think like social media presence plays an important role in terms of branding? It does, it does. It plays a very crucial role. और ये जो चीज़ अभी आपने identify की है ना, you might have heard about Confinity. Yeah, I have heard about it. So Hanan reached out to us like I think a month back, and we did a partnership with him. वो मेरे पास आया and he was like कि जी मुझे ना, मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कन्फिनिटी के लिए और कन्फिनिटी के नाम से, और उसके लिए आई नीड लाइक सॉर्ट ऑफ अ पार्टनरशिप और अ कोलैबोरेशन. मैंने कहा यार अभी मुझे बताओ व्हाट डू यू वांट, आई विल गिव इट टू यू. The reason was that I believe in empowering new startups, right? And Confinity is bridging that gap with tech startups and the I think यूनिवर्सिटीज के अंदर ना एक स्टिग्मा होता है कि जो CS वाले बच्चे हैं ना, दे नॉट वेरी सोशल एंड दे डोंट हैव दैट एक्सपोजर और सारा कुछ, एंड By the पीपल way, लाइक हनान. I'm a CS guy and I'm extremely social. हाँ, नहीं नहीं, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. एंड आई थिंक मैं अपने टाइम की भी अगर बात करूँ ना, तो उस टाइम ये बड़ा एक स्टिग्मा होता था, लेकिन आज की मैं ये बात करने लगा था आपसे कि पीपल लाइक हनान, पीपल लाइक यू, दे आर मेकिंग अ वेरी बिग डिफरेंस इन ब्रिजिंग दैट गैप विद टेक स्टार्टअप्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड द सोशल वर्ल्ड. सो क्योंकि देखिए जनरली भी ना जो टेक स्टार्टअप्स और इंजीनियर्स होते हैं, दे आर स्लाइटली मोर इंटेलिजेंट देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, क्योंकि you guys are much more smarter, you guys are much more associated with numbers, you guys think analytically. The rest of the people, जो हम लोग हैं, we are like हमारा IQ लेवल आपसे हमेशा थोड़ा सा कम ही रहता है. हम लोग जरा दूसरे साइड के ऊपर खेल रहे होते हैं. You guys are like geniuses. So obviously naturally वो एक जो disconnect है ना, people like Confinity, people like you, they're bridging that gap. And social media is time पे मतलब you can be sitting in Lahore and you'll be like you and I are talking over Zoom, right? You can be sitting in Lahore, you'll be like pitching your product to somebody like sitting in US or Canada or Australia or wherever, and you will be able to sell your startup or your product or your service.
Yeah, So I think exactly. social media, yeah, I'm sure you've experienced that as well. Yeah, So I social do media, like Founders Kahani with startup founders all over the world on Zoom. yeah, man, yeah, yeah. So you guys are gonna be like the next leaders in the market, and you guys are gonna be helping out the people who are gonna be coming after you, so that you can provide them that platform. कि भाई, whatever the situation is, आपके पास हमारे platforms हैं, आप लोग हमारे पास आए, we'll help you grow, we'll help you get that platform, we'll help you get that reach. So a very big thumbs up for you, for Confinity, for other people who are making that initiative. And social media and the reach that social media gets you is the key in being successful आज के ज़माने में. I'll dive into a little bit of political थोड़ा सा analysis में दूंगा without taking any names. I don't want to make this difficult for anybody, including you. पिछले दिनों we all saw what was going on, right? And social media played a very important role for a specific group in the political side. उन्होंने they used that power of social media and they gained the world's attention. There is no doubt in that, right? And I think अभी जो current scenario चल रहा है उसमें this has been the biggest example. So tech startups, software engineers, software developers, you guys, your audience, सोशल मीडिया की ग्रिप ले लो भाई. सोशल मीडिया के ऊपर आप दुनिया में कुछ भी बेच सकते हो और खरीदने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं. Yeah, exactly. Exactly. So, Hanan, there is one more challenge that startups usually face, and I personally faced it, which is like rebranding. So, what do you think, like, how a startup founder should approach rebranding? देखिए, rebranding is very important. Let me tell you why. um, you can't always stay like in a single spot, right? You Yeah, have to grow with time, you have to keep adapting to the new culture, to new environments, to new audiences. And हमारे से पहले जितने brands गुजरे हुए, they've all done rebranding at one point or another, राइट? जिस तरह ट्रेंड्स चेंज होते हैं अब, डिजाइन के अंदर मिनिमलिज्म का एक जमाना आया था. एवरीथिंग वाज मिनिमलिस्टिक, ठीक है. एवरी ब्रांड वेंट टुवर्ड्स अ मिनिमल लोगो, एवरी ब्रांड वेंट टुवर्ड्स अ मिनिमल फॉन्ट, टाइपफेस, कलर थ्योरी, सब चेंज हो गया था. क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस थी ना वो चेंज हो गई थी, जो बायर था वो चेंज हो गया था. उसको मिनिमलिस्टिक चीज चाहिए थी. क्यों? जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं और एक बिल बोर्ड आपको नजर आता है जिसके अंदर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, यू वोंट हैव इनफ टाइम टू ग्रास्प ऑल ऑफ दैट. yeah, तो मिनिमलिस्टिकली आपको अटेंशन ग्रैब करानी होती है लोगों की, राइट? सो एवरी लोगो वेंट फ्रॉम 3D टू 2D, एवरी फॉन्ट वेंट फ्रॉम 3D टू 2D. ठीक है, शैडोज गेम खत्म हो गई, सिंगल पतली फॉन्ट्स के ऊपर आगे गॉथम यूज होना शुरू हो गई फॉन्ट. सो आई थिंक रीब्रांडिंग इसके अंदर यू हैव टू फॉलो द मार्केट ट्रेंड्स. अब what I've heard when I was speaking to a lot of people overseas about the next trends in 2024 in terms of branding and graphic design and visual communication. सबने मुझे कहा जी मैक्सिमलिज्म का ज़माना आने वाला है. तो मैंने कहा अच्छा, ये तो हमने एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, उसके बाद तो हमने कभी इसको छेड़ा ही नहीं. मैक्सिमलिज्म क्या होता है? ठीक है, मिनिमलिज्म को टोटली ऑपोजिट, कि द रेट्रो सीन इज कमिंग बैक. ठीक है, फॉन्ट्स आर गोना बी लाइक वेरी बिग बिग बल्जी फॉन्ट्स, और कलर्स जो है बड़े हार्श होने वाले. सो गो टुवर्ड्स दैट. अब ऑडियंस को वो चीज़ पसंद आना शुरू हो गई. सोशल मीडिया ट्रेंड बना हुआ है कि मैक्सिमलिज्म इज द न्यू थिंग. सो yeah. when you are thinking about rebranding, follow the market trends, but you have to stay consistent with your own identity as well. इतना भी अपना आपको रीब्रांड नहीं करना कि आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर दें. द कोर वैल्यूज शुड स्टे देयर. लाइक फॉर इंस्टेंस एडिडास या पूमा की आप स्पोर्ट्स वेयर की बात करते हैं, देव ऑल रीब्रांडेड एट वन पॉइंट इन अदर. ठीक है, लेकिन देयर लोगोज, देयर फॉन्ट्स, दे एट अ सर्टेन एक्सटेंट दे स्टेड द सेम, क्योंकि उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस को लूज नहीं करना था, right? So they changed their trend a little bit, they adapted to the new trend, and they rebranded with themselves very subliminally. So subliminally आपने अपना आप को rebrand करना है, and you have to follow the market trend to grab that attention. That's nice. That's really nice. So, what do you think, like, as a branding expert or as a marketer, like, what are the metrics and the indicators that a startup can measure their success in terms of branding?
आई थिंक सबसे पहले तो आप केपीआईज अपने मेजर करना शुरू करें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, राइट? अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दे वेरी फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म. अब जस्ट गिविंग यू अ फ्यू एग्जांपल ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड. अब लेट्स सपोज यूर हैविंग एन इवेंट, राइट? अब इसके Yeah. अंदर केपीआईज मेजर करना इज वेरी डिफिकल्ट. यू कैन ओनली मेजर लाइक फुटफॉल, यू कैन मेजर the type of audience that you have, but other than that you can't measure कि जी आपका, let's suppose एक gathering है, एक event आपको हो रहा है, अब उसके अंदर you can't measure कि who is your potential client. ठीक है? Yeah. A potential client might be interested in your C tier product, or a potential client might be interested in your A tier product. ठीक है? तो उसके अंदर दैट्स अ बिट डिफिकल्ट. उसके लिए यू हैव टू बी वेरी कनिंग, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू बी वेरी शार्प कि इस ऑडियंस के अंदर मैंने अपने क्लाइंट को किस तरह फिल्टर आउट करना है, अपने पोटेंशियल ऑडियंस को किस तरह करना है. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट वेबसाइट्स और गूगल एनालिटिक्स, उसके अंदर केपीआईज मेजर करना इज वेरी इजी. आज के ज़माने में Yeah. तो द टूल्स आर आउट देयर, यू जस्ट हैव टू डाइव इनटू इट. अब व्हेन यू टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन, उसके ऊपर आप कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं अपना, यू सी कि जी आपकी रैंकिंग किधर है, आपके पेज की रैंकिंग किधर है, how are your competitors working, how are you working. उसके अंदर you can indicate yourself, you can find out the problems where you're lacking, you can start working on that. And in terms of meta की अगर मैं बात करूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम की, उसके अंदर KPIs मेजर करना is even easier. ठीक है? These tools are going to be helping you out so much कि you there is very little chance of failing. अब ये जो इंडिकेटर्स हैं, दे टेल यू कि जी लेट्स सपोज कोई नया टूल आया है, कोई नया एड ऑन आया है, कोई नया प्लगइन आया है, इसको आप इंटीग्रेट करें, आपकी रीच इंक्रीज हो जाएगी. अपनी टारगेट ऑडियंस को फिल्टर आउट करें, आपकी रीच इंक्रीज हो जाएगी. इतने बजट के अंदर आप इतने लोगों को टारगेट इतने रेडियस के अंदर करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस ऐड की आपके पेज की बेहतर हो जाएगी. सो keep an eye out for these key performing indicators. They will be your successful point. Yeah, oh, I really, really very great answer. Thank you so much, Sheryar, for jumping onto this call. And on the last, I have a very like tricky question from you. Like, what if What? something bad happens? How a startup can protect their image? सर देखें, यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर, यू शुड ऑलवेज एम एट द बेस्ट, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. जितने जो आजकल हालात चल रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन टर्म्स ऑफ inconsistency in the market, in terms of unpredictability, you should always have something to fall back on. I Yeah. was talking to a group last month, और उनको मैंने कहा था you should always have a plan B, right? Plan A is something जिसके अंदर आपने फोकस करना है, plan B is something to fall back on. You Yeah. can always start again as long as you have that will, as long as you think, "Hey, gee, I can make it, regardless of what the circumstances is, you can always start again." And disappointment की इसके अंदर गुंजाइश है ही नहीं. Always give yourself that second chance. Okay, totally understandable. Thank you so much, guys, for listening to Founders Kahani today. I hope you guys got a lot of insight from today's episode about the branding and about the marketing kind of a thing. I personally enjoyed this session a lot, and thank you so much, Sheryar, for coming to this call. And see you next time. Allah Hafiz, tab tak khayal rakhiye.